Okay, we are recording this session. I will upload it on the YouTube channel and I will send you the link. You can go through it for your revision. No? Okay, so actually I talked to so many people on Facebook. I don't remember exactly what is your case. So could you give me a brief overview? Yeah, I preparing last many times in PT, but Mm-hmm. I can't desire score. What's your desired Do score? you have any 58 above? Oh, 58 above, inshallah, you will get it. So you are going for admission. Yeah, Okay. So how many attempts some have you, is it possible for you to show me your scorecard? Okay, tell me, where do you practice on AF Uni Language Academy? Where? App Uni. I many time I used to App Uni app. Okay. So can you share me your mock results? I don't do the mock test, but I yesterday I give the exam and I got a 49 overall. Okay, you should do your mock exams now. If you have the subscription to App Uni, you should you must practice on App Uni because it will give you an one-on-one idea of what happens there. So is it possible for you to share your results with me? Also the blue lines, the blue lines. Okay, but I don't do that in App Uni mock test. Any mock test. No, no, real exam. Okay, just wait. I'll send you. Okay, you share it here or Just on wait. Facebook is okay. So, what do you think? What is your main problem? What is your query? You can ask me. Meanwhile, you send the result. Yes. Oh, my only problem is read aloud. Just read. I'm with okay read aloud, but just exam start. I fumbling lots of many fumbles, and I can't speak properly. That is something that will be corrected with practice. How long have you been practicing? Not long time, but I think one month ago. 1 month Just is joined up uni and 1 month is not enough, you know. one. I have been practicing on and off. I'm doing job also with job whenever I get time. So I have practiced for 8 months. I my desired score was 79. I got 82, alhamdulillah. Like 81 above in all modules. So you know this thing needs practice because you know this is a language of Gora people, like English people, and you cannot learn a new language in 1 month and to be proficient in it. It's not possible, humanly possible. So I would have suggested that you should have practiced at least for 56 score that you are desiring. You should practice at least 3 months. 3 months is not a big deal. The days pass so quickly. Okay, okay. I share one read aloud with you. You read it, then let me see what errors you're doing. It's not always fumble. There might be some other errors also that you are making, some other mistakes also. So meanwhile, you send me your score. At the same time, I open a read aloud paragraph and I ask you to read it, and then I can help you. I can figure it out. What mistakes you are making. Okay. And I have one query about on in the real exam. I can use one line strategy. I don't know. I hear I cannot say I anything about hear. it because I haven't taken the risk of going for one line strategy. Yeah. Okay. I But could just, many tutors say uh-huh. one line strategy is working in real exam. Okay, maybe yeah, because I don't have the experience, so I cannot say anything. Na? If it worked for them and if they scored, they are able to score good grades, then you should go for it. Because you know, in India, the exam is not that expensive, so you can give many attempts.
In Pakistan, it's very expensive. It is Yeah, 70,000 rupees. It's five times expensive than yeah, in India. India, it is 15,000, and if you buy watch voucher, it is 12,000. Pakistan, there is no voucher, yeah. and the fee is 70,000. So, so for you, Yeah. it's easy to give. So you can do an experiment. Like one time, you can go for one line strategy, and second time, if it doesn't work, then you can do experiments. Then for you, I would suggest that you should give every month. You should give exam at the end of every month. Yeah, I meet many Pakistani brothers in Makkah next year. Uh-huh. Last time, Uh-huh. sorry, last time. Uh, He also talk about it is very expensive in all is very expensive. Like the exam, like consulting, it's very expensive. yes, it is very And expensive. In India, in consulting is very free. Hmm. Okay. Okay. I make you read one article, one read aloud, and let's see where you are making mistake. Okay. One, I share the screen with you. Okay. Can you see the screen? Brother, can you see the screen? Hello? Hello? Can you see the screen? Can you see the screen? I can't hear you. I lost. You lost your mic connection. Oh, brother, I lost connection.
Okay. Okay, I show you the paragraph. You read it, and then I see what mistakes you are making. Okay. Mobile screen is Uh, short. Wait, I'm sharing the screen with you. I can't I'm use laptop, but or okay, start. if you want to start, yes, go ahead. In Germany, over 10,000 tons of diapers are declared each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper lines, which contain special polymers known uh, as super burners, are among the materials that end up landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling progress for these liners, leading to substantial improvements. Okay. Now, let me tell you what mistakes you're doing. Yes, you are fumbling, but fumbling is not the only mistake. The other mistakes are number one, you're not reading the right word. It is liners. You said liner, and there is the word was uh, like the word was you but like लिखा कुछ है आप उसको लफ्ज को पढ़ कुछ रहे हो like it for example it was written super observers you didn't read super observer you read something else it was written liners so you didn't say liners you said something else then there is the other word was for example progress but you didn't read the progress why you are not reading the word properly okay and secondly, you are not taking natural processes. I was very impressed when you said in Germany and then you paused for some seconds. I said, okay, he knows what the story is about. When there are commas and full stops, you should give some natural pauses. For comma, it should be like 1 second. And for full stop, it should be almost 3 seconds. So if you because you are not stopping you're not taking natural pauses that's why you fumble because we are humans we have to breathe also because we run out of breath so Yes, yes. so one issue is you are not reading the word properly the word was progress process and you read progress the other word was liners and you said something else secondly you're not taking natural pauses thirdly you are like it's look like you are sitting in the drawing room and you're not giving any test and you're just reading without any concern you are sitting in a proficient exam you should be very vigilant you should be very concentrating on the content you should be very aware that yes what you are doing so obviously I give you a benefit of doubt this was an unofficial reading thing but still you should pay concentration now listen how I read in Germany over 100,000 tons of diapers are discarded every year resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymers known as superabsorbers, are among the material that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, leading to substantial improvements. See how I stopped at the commas. This way, I was not able to fumble, and also at one time, I also ran out of breath. But I kept control of myself because if I don't, I will fumble. So after polymers, there is no comma or full stop. But still, I took a natural pause because the line was so big, dialine minus this is that I was about to fumble. So it's okay, though there was no comma, but I took a pause for myself because I knew that I ran out of breath. See, it was Yeah, yeah. your pronunciation is good. I will not say that people do make fun of Indian pronunciation. No, your pronunciation is very fine. Secondly, these softwares are very sophisticated. They know if you're from India or if you're from Pakistan, so they don't cut your marks for your accent. They never cut your marks for accent. They know that yes, naturally people from obviously that person is giving a test who is not a native speaker, right? So they give you a point for that. So and also so it just needs practice again and again you need to have a practice okay this was so do you understand what mistakes you made Yeah, yeah, yes. when I will give you Clearly the link understand. of this video, you can go to this part. You can fast forward. You see the video, come to this part, open this thing, and you can listen to yourself.
what you were saying and how you were reading it, and how what mistakes you were making. That was one reason. Okay, now I show you. Let's see how you read this thing. Okay, this is an image in front of you. Shall I maximize it? Okay. So how would you read this line? How would you describe this image? Okay. Okay. Can you see? Can you read? What? Ma'am? How will you describe this image? We are like practicing another question, that is describe image. So how would you start? I just speak in on describe image. I just maintaining my fluency. Okay. So your It's describe my image. okay. Huh? Yes, ma'am. ओनली मैं डिस्क्राइब इमेज मैंने जो कल एग्जाम दिया था ना Hmm. उसके हिसाब से जो मैंने मैंने सिर्फ फ्लुएंसी मेंटेन की थी जस्ट फ्यू कीवर्ड्स लिए थे हाँ और हाँ। बोल दिया था सही। जी ठीक है, ये भी अच्छा है। तो इसमें जितने ज्यादा आप बोलेंगे ना, जितने ज्यादा कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, उतने ज्यादा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और जितने पर क्योंकि अगर आपको ज्यादा की नीड नहीं थी, तो आपने जो है वो कम बोला था। ठीक है। चले, जी इसका जी बता, अब इसको कैसे पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि आपकी मिस्टेक्स क्या थी। नाउ रीड दिस, लेट्स सी इफ देयर इज एनी इम्प्रूवमेंट। स्पीक कैन आई स्पीक यस यस, स्टार्ट। Around 250 million year ago, 700 species of reptiles closely related to the modern day crocodile roamed the earth. Now, new research reveals how a complex interplay between climate change, species competition, and habitat can help explain why just 23 species of crocodile survive today. Hmm. Okay, this is crocodile. This is survive. One thing, if you don't know how to pronounce the word, you can skip it. But these are easy words. You're not paying concentration. This is survive. You said something else. This is crocodile. This is species. And this is complex. This is interplay. So you're not reading the word correctly. You're not paying concentration to the word. आप लफ्ज पे ध्यान नहीं दे रहे कि क्या लिखा हुआ है। आप सिर्फ बोल रहे हैं। वो हाँ और मेरा एक रीजन ये कि ये मोबाइल की जो स्क्रीन है वो आई ठीक है। आई ओके। यूज्ड इन ओके। मोबाइल Okay, but it was fine. It was better. You were taking natural pauses. Okay, let's do the last one. Let's see. And now what you do is first आप इसको पहले प्रैक्टिस करें, मतलब पहले एक दफा पढ़े, फिर मुझे पढ़ के सुनाएं, ताकि आपकी गलती ना हो। अच्छा, वेन जब आप टेस्ट कर रहे थे, तो क्या आपने पहले इसको पढ़ा था, प्रैक्टिस किया था, फिर बोला था, या बोल दिया था? ना मैंने मैंने क्या हाँ। है मैंने पहले तो 15 मिनट 15 सेकंड तो देखा बस मैंने जस्ट 8 to 10 वर्ड ही बोले थे अच्छा, आपने वन लाइन स्ट्रेटेजी। अच्छा, वो भी अगर की फॉर जी जी एग्जांपल, तो जब आप देख रहे हो तो देखो नहीं, उसको जोर से पढ़ो। बोलने से पहले जब यस वो सर आपको प्रैक्टिस टाइम देता है, तो भी प्रैक्टिस टाइम में आप जोर से बोलो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस टाइम में सिर्फ दिल में पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप साथ में ब्रीद नहीं कर रहे। राइट। तो आप दिमाग में पढ़े जा रहे हो, आप बिल्कुल सही, आपको लगता है कि मैं दिमाग में सोच रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ तो बिल्कुल सही पढ़ रहा हूँ, वो आपको लग रहा है। मगर जब आप उसको जी प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी जोर से पढ़ के प्रैक्टिस करो, क्योंकि उस वक्त फिर आप सांस भी ले रहे हो और पढ़ भी रहे हो। तो आपको पता चल जाता है, और अपने आप को सुन भी रहे हो, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा लफ्ज आप गलत बोल रहे हो, कहाँ आपका दम घुटने लगा है, कौन सा लफ्ज जो है वो आप फंबल करने लगे हो। तो इससे जोर से बोलने से आपको खुद पता चलेगा, दिल के अंदर नहीं पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करें। तो पहले इसको एक दफा पढ़ें। ठीक है, ऐसे जैसे प्रैक्टिस टाइम आपको दे रहे हैं कुछ सेकंड्स का, तो आप इसको जोर से पढ़ें। और फिर जब रीड अलाउड की बीप के पास स्टार्ट होता है, तो फिर उसको दोबारा पढ़ें। ठीक है, तो आप दोबारा करें। Across the globe, जोर से पढ़े ना। resources among the various ideas being हाँ, ऐसे। explored.
The concept of converting carbon dioxide into a stable fuel snows shows significant promise. Hmm. Across the globe, there is a widespread effort to explore methods are extracting carbon For dioxide from the extracting. atmosphere Methods for or extracting. me- कहाँ पे? हाँ, मैं methods आपको मैं आपको बीच में methods for टोकूंगी, ठीक है? आपकी इसलिए टोकूंगी ताकि आपको बता सकूं आप कहाँ गलत कर रहे हो। शुरू से पढ़े अक्रॉस। across the globe, there is a widespread effort to explore methods for extracting carbon dioxide from the atmosphere or power plant emission and transforming it into इमिशंस a लिखा हुआ है, valuable resource. सॉरी इमिशंस लिखा हुआ है, इमिशन में एस दिया हुआ है, इसमें भी मार्क्स कटते हैं। इमिशंस, प्लांट इमिशंस ऐसे Emission बोल। हाँ, प्लांट इमिशंस। transforming, transforming it into a valuable resource. Among the various थोड़ा ideas फुल स्टॉप being रुके, explored, रिसेस के बाद थोड़ा सा रुके, 3 सेकंड के लिए रुके। जी जी, रिसोर्स, थोड़ा सा रुके, resource. एक दो सेकंड के लिए फिर बोले, ठीक है? Among the various हम्म। ideas being explored, the concept of converting carbon dioxide into a stable fuel shows significant promise. यस, वेरी गुड। अब आपने एस भी पढ़ा, शोज भी पढ़ा, आपने जहाँ एक्सप्लोर्ड है वहां पे कॉमा पे रुके भी, ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ तो इंसान का मसला ये है ना कि जब तक उसको डंडा नहीं पड़ता वो उसके अपनी गलतियां ठीक नहीं करता। तो मैं आपको बार बार टोक रही थी वहां पे कि नहीं ये गलत पढ़ रहे हो, ये गलत पढ़ रहे हो, यहाँ ये सही करो, ये सही करो। तो अब आपने बेहतर पढ़ा, अब आपको पता चले आपकी मिस्टेक्स क्या हैं। अ- असल में ये होता है ना कि जब बंदा प्रैक्टिस कर रहा होता है ना ऐप यूनी पे तो स्पीकिंग का थोड़ा मसला ये है कि वहां पे कोई होता नहीं है जो आपको वन ऑन वन ना, दे गिव यू वन ऑन वन फीडबैक दैट व्हाट यू आर डूइंग राइट एंड व्हाट यू डिड रॉन्ग। So I usually used to I used to call different coaching centers and I used to say, oh, I want to join your coaching center, so can you help me? So they used to say, yes, we I said I want to test if you're good or not, no? So I used to take the demo sessions and I took 3, 4 demo sessions for free from different coaching centers in Pakistan. I didn't join them, but I took, why? Because whenever they used to give me a demo sessions, they used to give me feedback where I was doing wrong, and that had me improved a lot. So that's why I said I will give you one free demo session, because it is very important that you get one-on-one feedback from a human being that where you are doing wrong. Okay, did you get my Yes, point? yes. And you are provide any online classes? Yes, I do provide online classes to people who are interested, and I take like payment for that. So I'm still waiting for my student. He gave a Yes, test ma'am. today. I want to coaching. Yes, I inshallah 5 March. Oh, you're 5 months. My yes, yes. Okay, 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 5 months. Okay, so one thing is, see, why I give a demo session? I'm not hungry for money. I give a demo session and then I ask them that whatever I teach them, they practice it, and then they show me if there is any improvement in their score. If I see any improvement in their score, then I continue with the classes. If I don't see any improvement, then I don't take money. So I have told you what mistakes you're doing in Read Aloud. I would suggest that even if you don't take any classes from me, for your own good, you should practice what I taught you, how I taught you, and see if there is any improvement in your score or not. In App Uni, mocks, in App Uni that you do. And why didn't you give mock exam? You didn't buy the subscription, VIP subscription? Yeah, yeah, yeah. You should buy. It is so cheap in India. I wanted. My one of friend here. Oh, okay. In Pakistan, क्या man? in Pakistan it is very expensive for 6,000 rupees. So I have one friend No, from no, no, India. no. I asked him to In buy it for me. It was so cheap for him. So it's very cheap, yeah, and I will suggest you give one more 12 test every day. Okay, one mock test. let's do one more read aloud. Let's see how you have improved. Let's do one more read aloud. This is lengthy. This is very lengthy. This is the real. Now it's your test. Let's see how you have improved. First, practice it in quietly. Make sound, like speak it loudly, and then you read it. इसको पढ़ें, प्रैक्टिस करें, जोर से प्रैक्टिस करें ताकि मुझे आवाज आए।
A team of international researchers has uncovered a fascinating phenomenon आगे पढ़े। in response to rising global temperatures. Himalayan glaciers are actively working to preserve themselves by cooling the air in contact with their ice surface. However, it remains unclear long this glacier can continue to fight back against the effect of climate change. ठीक है, अब जोर से पढ़े। अब मैं बीच में टोकूंगी जहाँ आपकी गलती होगी, ठीक है? स्टार्ट करें। A team of international researchers has uncovered a fascinating phenomenon. In response to rising global temperatures, Himalayan glaciers are actively working to preserve themselves by cooling the air in contact with their ice surface. However, it remains unclear how long these glaciers can continue to fight back against the effect of climate change. वेरी गुड, वेरी गुड। आपने सही पॉजेस भी लिए, सही प्रोनाउंस भी किया, बस सिर्फ एक आपने वर्ड गलत बोला। आपने फाइट को सही नहीं पढ़ा, अगेन वो उस पे ना आप लेजी हो गए। ठीक है, बाकी सारा अच्छा था, बहुत अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था। आई एम रियली अप्रिशिएट कि आपने दो तीन उस पे सजेशन पे चीजें ठीक कर दी। वो आपने इसको फ्लाइट पढ़ा, फ्लाइट नहीं है ये, फाइट है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा Right. आप फंबल करने लगे थे, आपको लगा फिनोमेनन नहीं बोल सकते, मगर आपने खुद पे कंट्रोल किया और नेचुरली फिनोमेनन को पढ़ लिया। ये भी बहुत अच्छी चीज है। हालांकि आप डर भी रहे थे, आपको लफ्ज भी बड़ा लगा कि पता नहीं मैं सही बोल सकूंगा कि नहीं बोल सकूंगा। ये सारी चीजें ना Eh, आप अपना लेक्चर में आपको दे जी, दूंगी, यूट्यूब की लिंक, आप दोबारा सुनिएगा, आप खुद देखिएगा आप इंप्रूवमेंट आए, यू गॉट कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग इन दिस एग्जाम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। yes. मेरे कल ऐसा ही हुआ था मैम। मेरे हालांकि मुझे पता था ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, नॉट ए ह्यूमन इन्वॉल्व, बट व्हाई आई एम सो स्केयर अबाउट, आई एम वेरी स्केयर। Because you're not उसमें taking मैं any, थोड़ा because you're not giving any mock exam. Mock exams are very necessary. I used to give three mock exams daily. नो मैम, आई डोंट डू मॉक एनी मॉक। Why not? Mock is very tough. I know that. And what I used to give three mocks, but not in one sitting. जैसे दो तीन क्वेश्चंस रीड अराउंड के किए, मॉक स्टार्ट किया, बोर हो गई, उसको बंद कर दिया, चली गई इधर उधर, अम्मी से बात कर ली, टीवी देख ली, फिर आया, फिर स्टार्ट किया, कंटिन्यू किया। मॉक एग्जाम में ना टाइम एक बाद में खुद जॉब कर रही थी। अब मैं तीन चार क्वेश्चंस किए, प्रैक्टिस किए रीड अलाउड के, फिर क्लास लेने चली गई। फिर ब्रेक में तीन चार क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फिर क्लास कंटिन्यू कर दी। मगर ये है कि कम से कम खुद को प्रैक्टिस करवाती थी। फिर कभी कभी वीकेंड्स पे क्योंकि छुट्टी होती थी, फिर मैं पूरा एक मॉक टेस्ट बैठ के करती थी। उसमें भी कभी पानी पीने के बहाने उठ गई, कभी इस तरह। क्योंकि आपको खुद को ना उस माहौल में एडजस्ट करना पड़ेगा। उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जब तक आप मॉक नहीं देंगे ना, तो आपका नहीं इम्प्रूव हो सकेगा, आपके पैसे जाया होते रहेंगे, इम्प्रूव नहीं हो सकेगा। आप डेली एक मॉक करें, चाहे तोड़ तोड़ के पीसेस पीसेस में ही क्यों ना कर लें। खाना खा लिया, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लिए, फिर घर वालों से बातें कर ली, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लिए। वो बहुत जरूरी है, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जी जी तो आपका मार्च को है ना, आपके पास टाइम अब हार्डली कुछ 2 हफ्ते रह गए। मेरी यही मशवरा है, आप डेली एक मॉक दें, चाहे पीस टुकड़ों में ही क्यों ना दें, पीसीज में दें, कोई जी बात जी नहीं। जी 5 रीड अलाउट कर लें, फिर उठ जाएं, चाय पीने चले जाएं, फिर 10 रिटेल लेक्चर्स कर लें, फिर खाना खाने चले जाएं, कोई बात नहीं। मगर आपको टेस्ट मॉक देना पड़ेगा डेली। मैम, गेट ये आप रीडिंग रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स वो भी रीडिंग, हो जाएगा? आवाज चली रीडिंग गई। फिल इन द ब्लैंक, जी जी जी। I want just 54 above बस, only। उसके लिए भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। उसके लिए भी तो ऐसे जी ही तो जी जी आपको थाली में उठा के नहीं दे देंगे ना। जी जी जी। रीड अलाउड, चले ये है, रीड अलाउड आप कैसे करते हो, इसकी भी कुछ ट्रिक्स होती हैं रीड अलाउड को करने की। मेरे सबसे कम मार्क्स रीड अलाउड में आए, 81 आए थे। मगर रीड अलाउड सबसे मुश्किल आता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, तो आपने तो खैर दिया हुआ है। सबसे मुश्किल जो वहाँ पे होता है ना, वो रीड अलाउड होता है। लोगों को ऐसे राइटिंग मुश्किल लगता है, मुझे रीड अलाउड मुश्किल लगा था। और रीड अलाउड नहीं, सॉरी, रीडिंग पार्ट, रीडिंग मॉड्यूल। जी जी ओके।
एंड मैम वो, हाँ, ये कितने ये टाइम पे हो जाएंगे आप आवाज, क्लास? आपकी आवाज कट रही है। जी मैम, मैं क्या कह रहा हूँ, इस टाइम पे हो जाएंगे क्लास? मतलब डेली आप क्लास लेना चाह रहे हैं? जी, अगर ये आज कौन सी तारीख हुई, 20? मैं क्लास मेंशन देने में कोई मसला नहीं है, मैं इस टाइमिंग में दे सकती हूँ, उसका भी कोई मसला नहीं है। बट पहले मुझे देखना पड़ेगा कि आपने वाकई डेमोन्स्ट्रेशन के बाद चीज़ इंप्रूव की है कि नहीं की, आपको उन्हें इम्प्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी। अगर वो होगा तो ही मैं आपसे क्लास लूंगी, वरना मुझे बिला वजह किसी के पैसे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, So I would suggest that you first बिल्कुल। do read aloud the reading section once and show me if there is any improvement, and then I will say yes if I want to take your classes, or no if I don't want to take your classes. For me, taking classes is only if you show me improvement. ओके, आई ट्राई बेस्ट। So what I suggest is, you know how to take speaking. Like you should give me a mock exam. आप क्या करें कि जो सिर्फ स्पीकिंग का मॉड्यूल है ना, उसका एक मॉक दें और फिर मुझे रिजल्ट दिखा दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं देखती हूँ कि क्या आपसे क्लास लेनी चाहिए या नहीं। बिला वजह पैसे मुझे नहीं चाहिए। एक मिनट, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मॉक टेस्ट है ये ना। ठीक है, आप उसका जो एग्जाम है, में। हाँ, ओके, आवाज कट रही है, ये आवाज ही नहीं आ रही। जी आपका जी। ये सेक्शन टेस्ट है ना, इस पे स्पीकिंग पे जाके जो स्पीकिंग का मॉड्यूल है ना, सिर्फ वो मैंने तो वो मेरी सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई है, तो सिर्फ ये स्पीकिंग का मॉड्यूल है, इसको आप ओपन करेंगे ना, सिर्फ स्पीकिंग के क्वेश्चंस आएंगे। इनको आप कीजिएगा, भले आप एक सिटिंग में नहीं कर सकते, इट्स ओके फाइन, थोड़े थोड़ी थोड़ी पीसेस टुकड़ों टुकड़ों में करें। फिर बीच में आप उठ सकते हो, टेस्ट को वहां बंद करके क्लोज दबा के आप उठ सकते हो। तो एक करके दें, फिर पता चलेगा कि आपने, फिर मुझे वहां से पता चलेगा कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, जी जी। हो सकता है ऐसा। ना मैं कल देता हूँ एग्जाम, ये मॉक टेस्ट का। हाँ, आप कल कर लो, किसी वक्त भी कर लो। आपको मैं 24 आवर्स दे रही हूँ, अभी 10 बज रहे हैं मेरे पास, राइट? आपके पास 10:30 हो रहे होंगे। आपके पास 24 घंटे हैं, आप अपने आप को टाइम दें, एक टेस्ट दें। आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मुझे टेस्ट बता दीजिएगा। आप पहले मुझे जी इसका ना, जो टेस्ट आप दे देते हो तो लिंक शेयर होती है एक, वो लिंक शेयर कर देंगे, मैं खोल के उसको देख लूंगी कि आपने कैसा दिया। आप पहले मुझे लिंक फेसबुक पे भेज दीजिएगा, मैं वहां से देख लूंगी। आई कैन टेल दैट वेयर यू नीड टू हैव इम्प्रूवमेंट्स। ओके जी। Okay. So after saying that, after giving you like, okay, I will give you one more mock exam demo for free. You do one speaking part.